So hello everyone and welcome to Career Launcher. So as we all are aware that every Tuesday and Wednesday at 7 p.m. I meet you, where on Tuesday at 7 p.m. we discuss static GK and on Wednesday we discuss current affairs. So in today's class we are going to discuss the current affairs for the third week of August. So let us begin with today's class. Am I audible, visible? Is my voice reaching? If yes, then please write yes. Am I audible? Is my voice reaching? If yes, okay, I've checked it. So let us begin with the questions. And if you want to watch the previous classes, please go and see the playlist section. So first, subscribe to our channel, go to the playlist section, go here, click on view full playlist, and here you will get all these videos. Okay. So let us begin with the first question. What is the name of anti-drone system launched by Punjab to counter cross-border smuggling? So I hope you are aware Punjab is at the border. So cross-border smuggling happens. To stop that, the Punjab government has come up with an anti-drone system. What is that called? Can anyone tell me? The right answer is option C, Baaz Aankh. Okay. So Baaz means hawk and Aankh means eye. So Baaz Aankh, hawk's eye. So they'll be using drones like this. This is called as UAV, unmanned aerial vehicle, or drones to counter it. The anti-drone system. So C is the right answer to this question. Okay, let's move on to the next one. Which of the following Indian cities has been ranked the safest in 2025 according to Numbeo Index? Vadodara, Pune, Mangalore, Chennai. What is the right answer to this question? क्या सही जवाब है? The right answer is option C. Mangalore is the right answer to this question. तो आप देख सकते हो इंडिया की रैंक 1 है मैंगलोर कर्नाटक की, और वर्ल्ड ओवर ग्लोबल रैंक है 49. सो हाई सेफ्टी इंडेक्स स्कोर में. ओके, दिस इज वर्ल्ड ओवर रैंकिंग, एंड वर्ल्ड ओवर रैंकिंग में रैंक 1 इज अबू धाबी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. So the right answer is C. Let's move on to the next one. Which of the following sites has India nominated for UNESCO World Heritage Site status for 2025-2026? Your options are Bodh Gaya, Sarnath, Nalanda, Ajanta Cave. Yes, CUET के लिए भी हेल्पफुल होगी. यस, नहीं, ऑफ कोर्स ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम में जहां जहां करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे वहां इंपॉर्टेंट होगा. यस. सो 2025-26 की साइकिल के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किया है ये वाला साइट कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया जाए. दैट इज द व्हाट इंडिया हैज रिक्वेस्टेड. सो विच रीजन इंडिया हैज रिक्वेस्टेड, विच साइट? सारनाथ. सारनाथ जो है ना बनारस, वाराणसी में मिलेगा. ठीक है. सो बी इज द राइट आंसर. India nominated Sarnath, a major Buddhist site in Varanasi, under 2025-2026 UNESCO style. Okay. तो nomination process में 1.5 years लगता है almost. That is what you should be knowing. Let's move on to the next one. The next one is what caused the most recent steep coral decline in Great Barrier Reef? आई एम श्योर आपको पता होगा ये कोरल है, बहुत बड़ा कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के पास, और इसमें नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है. विच टाइप ऑफ लॉस? एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट होता है कोरल ब्लीचिंग, वैसा कुछ समथिंग हुआ है ना. सो द राइट आंसर इज डी, है ना. देखो होता क्या है कि कोरल्स ऐसा दिखता है, दीज आर एनिमल्स ऑफ कोर्स. कोरल पॉलिप्स है जो कि सिम्बायोसिस में होता है. इट इज इन सिम्बायोसिस विद zooxanthellae algae, है ना, zooxanthellae. So this zooxanthellae provides food to the polyps, and these polyps provide actually support. ठीक है.
लेकिन because if there is any, let's say, temperature change or the water gets polluted or because of some reason, this actually can expel the zooxanthellae, which is a colorful, beautiful algae, है ना. तो उसके बाद क्या होता है, this becomes like this. इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग. व्हाइट हो गया है, अजीब सा, देख रहे हो कैसा हो गया, खराब सा. दैट इज व्हाट यू शुड नो, इट्स कॉल्ड एज कोरल ब्लीचिंग. ठीक है. And this has actually happened. देखो ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन वालों ने डाला भी ये फोटो. सो डी इज द राइट आंसर. सो हियर इज इंडिया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया. यहां पर आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ. Okay, the right answer is D. The next one is, where was the third UN conference on landlocked developing countries held? Landlocked country was ओशन, है ना. नहीं, जो बड़ी वाटर बॉडी, सी, ओशन, इस तरह की चीज को टच नहीं करता हो, लैंड लॉक्ड हो, है ना. तो यूएन कॉन्फ्रेंस, थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज कहां हुआ? वेयर इट हैपेंड, प्लीज टेल मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो. Anyone? The right answer is Avaza. C is the right answer to this question. Avaza in Turkmenistan. ठीक है. So this is India. ये है तुर्कमेनिस्तान और यहाँ पे आवाजा जगह वहां हुआ है. ठीक है. That is what you should be knowing. Okay. The next one is International Youth Day. कब सेलिब्रेट किया जाता है? When do we celebrate International Youth Day? बताइए. सो 12 अगस्त को एक नेशनल यूथ डे होता है. देयर इज वन कॉल्ड एज नेशनल यूथ डे विच इज एट इंडिया लेवल. नेशनल मतलब इंडिया के लेवल पर, है ना. विच इज ऑन 12th जनवरी. स्वामी विवेकानंद जी बर्थडे. ठीक है. और एक इंटरनेशनल यूथ डे 12th अगस्त को. ठीक है. is the right answer. Let's move on to the next one. Which corridor features India's longest Vande Bharat Express route? Vande Bharat is generally, of course, you are aware, AC chair car, है ना. So generally, Vande Bharat and Shatabdi trains are not very long. Maximum 8 to 10 hours route से ज़्यादा नहीं होती है. So currently the right answer is Nagpur to Pune. C is the right answer to this question. And covering almost 12 hours. Let's move on to the next one. Which of the following viruses was reported for the first time in a wild animal zoo in Pune? Ebola, MCF virus, Hendra, Nipah virus. I'm waiting for the response. आप लोग आंसर कीजिए. I'll be very happy to know. बताइए. The right answer is option B. MCF virus is the right answer. Malignant catarrhal fever virus. ठीक है. आप देख सकते हो, MCF is a highly fatal disease of wild animal and domestic ruminants caused by this OVHV2 virus. Okay. So just remember it. Let's move on. Who won women's javelin throw at Indian Open 2025? Javelin throw वही स्पोर्ट्स है जो नीरज चोपड़ा का स्पोर्ट्स होता है ना. नीरज चोपड़ा also plays the same javelin throw, but here we are talking about women's javelin throw. What is the right answer to this question? The right answer is option A. Annu Rani is the right answer to this question. Secured gold with a throw of 62.01 meters. Let's move on to the next one. Under which article of the Constitution is the process for removing a High Court judge initiated?
Because recently it was in the news that there'll be a removal process for Justice Yashwant Verma that is being initiated in the parliament. So what is the removal process? Basically, Article 217 and 18 talks about High Court judge and their appointment, removal, etc. Okay, appointment, removal, सब यहाँ mentioned है. And here it says that the removal process of a High Court judge is same as that of Supreme Court judge. Okay. And the removal of Supreme Court judge is mentioned in 124. Okay. So technically it will be 124, 217, 218. Okay. So B is the right answer to this question. Relates to the removal of High Court judges. B is the right answer. The next one is which of the following countries shut down its anticipation of Typhoon Podul? In anticipation. Actually हुआ क्या कि typhoon आने वाला था Podul, because of which this country actually shut down many of its let's say industries, offices, shops, etc. Which country we are talking about? बताइए. The right answer is Taiwan. C is the right answer. It is also known as ROC, Republic of China. है ना, टाइफून पोदुल है ना. तो है ना, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट इंपैक्टेड ताइवान एंड आप देख सकते हो ताइवान एंड साउथ चाइना. ओके. So here is India. This is China. This one is Taiwan. तो यहीं पे कहीं पे आया था ये, तो इस रीजन में इंपैक्ट पड़ा था. एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान? ताइवान कैपिटल is Taipei. Okay. Let's move on to the next one. Which of the following states is the largest milk producer in India? Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. What is the right answer? बताइए. The right answer is, देखो सबसे ज्यादा कैटल्स कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में. So D is the right answer. Highest milk production from both cows and buffaloes. D is the right answer. Okay. Let's move on to the next one. Who won India's first ever wushu medal at World Games? वुशु एक तरह का रेसलिंग टाइप समथिंग होता है, समझ लो. CUET Okay, Nani, I will give the suggestion to the team. हो सकता है मैं नहीं वीडियो बना सकूं because my classes are fixed on Tuesday and Wednesday. But okay, I will send the suggestion. ठीक है. The right answer here is option D. Namrata Batra is the right answer to this question. Okay. One silver in wushu at 2025 World Games. ठीक है. है ना, 17 अगस्त की न्यूज है. The next one is which of the following countries hosted 2025 World Games? Japan, China, UAE, South Korea. What is the right answer? If you know the answer, please answer me. The right answer is option B, Chengdu, China. है ना? 2025 World Games, Chengdu, China. B is the right answer to this question. Sichuan, China. The next is Infosys is acquiring 75% stake in which company? Infosys का नाम सुना होगा, I'm sure you must be aware. Telstra Venture, Versant Group, Data Lake, Aussie Cloud Private Limited. What is the right answer? बताइए.
So the right answer is option B, Versant Group. ठीक है, Infosys and Telstra. है ना, Versant Group Telstra की सब्सिडरी है Versant Group. So the right answer is B. ठीक है, 75% taken Versant Group, which is actually a subsidiary of Telstra. So the right answer is B. The next is, which of the following countries unveiled the world's first AI robot for full process crop breeding? Look, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. Who is very much ahead in these things nowadays, making robots after robots using AI? आपको पता होगा, ये काफी ज्यादा न्यूज में है ना. They have made AI doctors, AI hospitals, पता नहीं और क्या क्या बना रहे. China. C is the right answer to this question. ठीक है, Chinese researchers from CAS developed first AI robot end to end crop breeding. ऐसा कुछ होगा. ये robot है. This I am showing from their website. This is the China's government's website, Global Times. China researchers developed world's first AI-based breeding robot for hybrid pollination. C is the right answer to this question. The next is, what initiative was launched by Union Health Secretary to improve drug safety in India? Pratap Shrestha Suraksha Drug Safe. The right answer is option B, Shrestha. State Health Regulatory Excellence Index aims to benchmark and improve state level drug regulation. ठीक है, health of all citizens begins with safety, quality and efficacy of the medicines. B is the right answer. The next is, Mission Raftar involves upgrading train power system on which route? So इससे क्या होगा कि ट्रेन की जो पावर यूटिलाइजेशन है, मतलब पावर वो बढ़ जाएगी एक तरह से. मुंबई, गोवा, चेन्नई, बैंगलोर, विरार, सूरत, दिल्ली, कोलकाता. What is the right answer? Anyone? The right answer is option C. No. Virar Surat route to be doubled. वो मुंबई अहमदाबाद दिल्ली कॉरिडोर है, उसी का पार्ट है, उसी के बीच में एक हिस्सा है विरार टू सूरत. It's a part of on that route. Mumbai Ahmedabad Delhi corridor. In that route, you will find a short route called as a small route Virar Surat. मतलब उसका एक सबसेट कह लो route. So power supply will be doubled. That's the idea. The next one is, how many gallantry awards were approved by President Draupadi Murmu on the eve of Independence Day? That is on 15th August. Gallantry awards are actually generally given to military personnel. For their achievements. What is the right answer? The right answer is A. 127 gallantry awards is the right answer to this question. And 40 distinguished service award. Okay. That is what you should be knowing. Let's move on. So these include like Kirti, Chakra, Shaurya, Chakra, Ashok, Chakra. ये सब उसमें आता है, include होता है. ठीक है. No need to remember all. सब याद नहीं रखना है all कि किसको किसको मिला. Of course, it is very difficult. The next one is, which of the following countries launched world's first AI-powered passenger corridor? Singapore, Japan, UAE, United States. बताइए. The right answer is option C. है ना? United Arab Emirates, Dubai. C is the right answer. Dubai airport in UAE launched the AI corridor for passport-free travels. है ना? So they can clear immigration in 6 seconds. मतलब एक्चुअली क्या है, आपको जब इंटर करोगे और आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने में, मतलब प्लेन तक पहुंचने में बस मतलब बहुत स्मूथली आप पहुंच जाओगे, इन द सेंस कि आपको हर जगह टिकट वेरीफाई करने में इजी होगा डिजिटल टेक्नोलॉजी एटसेट्रा से.
The next is, who was the governor of Nagaland who recently passed away? P.S. Sridharan Pillai, La Ganesan, Satyapal Malik, and Ravi. What is the right answer? गवर्नर थे नागालैंड की, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई. सर्विंग गवर्नर थे, मतलब रिटायर नहीं किए थे. ला गणेशन है ना. तो 15 अगस्त को उनकी डेथ हुई. 15 अगस्त 2025. That is what you should be knowing. And a governor of Nagaland from 20th of February 2023 until his death. He had earlier served है ना, मणिपुर, वेस्ट बंगाल और अदर जगह भी रह चुके थे. चार्ज लिया था उन्होंने. So B is the right answer. Let's move on to the next one. Indian aquanauts. देखो एस्ट्रोनॉट्स होता है, aquanauts यानी पानी के अंदर जो जाते हैं ना. एस्ट्रोनॉट्स जैसे होता है, जैसे aquanauts. Recently planted national flag at what ocean depth? Anyone? The right answer is option C, 5,000 meters. Below the sea level in Atlantic Ocean. आप देख सकते हो 5,000 मीटर अंदर जाकर के इंडिया का फ्लैग ले गए थे. In Rameshwaram in Tamil Nadu in 77th Independence Day. Near Rameshwaram. So not Atlantic तो नहीं कहलाएगा ना. Indian Ocean होगा तो technically. That's what you should know. The next one is, where are UN negotiation for world's first plastic treaty being held? हालांकि ट्रीटी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, बट कहां पर प्लास्टिक ट्रीटी हो रहा था? मतलब प्लास्टिक को एक तरह से फेज आउट करने का होगा कुछ प्लान. या I'm sure you must be aware plastic is quite harmful for environment because it is non biodegradable, है ना. मतलब ये जल्दी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गलता नहीं है जल्दी, वैसे ही का वैसे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा, तो डिग्रेड नहीं होता है. सो सी इज द राइट आंसर. जेनेवा में प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी स्टॉल्ड एज जेनेवा टॉक्स एंड विदाउट डील. स्टॉल्ड मतलब जैसा रुक गया, मतलब सक्सेसफुली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी. ठीक है, जेनेवा प्लेस है स्विट्जरलैंड में. दिस यू शुड बी नोइंग. द नेक्स्ट वन इज, which class of submarine was delivered by China to Pakistan? I'm sure you must be aware Pakistan is very much dependent on China when it comes to defense technology. तो आपको बताना ये है कि चाइना ने अभी पाकिस्तान को कौन सा सबमरीन प्रोवाइड किया है. कालवेरी क्लास. देखो कालवेरी क्लास तो इंडिया में चलता है, ये तो होगा नहीं, है ना. हैंगर क्लास, स्कॉर्पियन क्लास, टाइप 209. इवन ये भी जो है स्कॉर्पियन क्लास इंडिया ने फ्रांस के साथ टाई अप किया था, ये भी नहीं होगा आंसर में. आंसर इज ऑप्शन बी, हैंगर क्लास. Third hangar class submarine was delivered to Pakistan by China. Okay, that is what types of India says. B is the right answer. Let's move on. आप देख सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो. तो चाइना शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है और कराची शिप यार्ड लिमिटेड लोगों मिलके. सो बेसिकली दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन. ओके, और ये चाइनीज ओरिजिन टाइप 039A का मॉडल है एटसेट्रा. जस्ट हैव एन आइडिया, उतना डिटेल नहीं जानना है. The next is, which of the following Bollywood films completed its golden jubilee on 15th August 2025? शोले, मुगले आजम, जंजीर, मदर इंडिया. बताइए. 50 साल पूरा हुआ. 1975, 15th अगस्त 1975 को बनाई गई थी. तो 50 ईयर्स कंप्लीट हो गया. सो शोले बहुत फेमस फिल्म है, very famous film. So A is the right answer. Completed 50 years since its release on 15th August 1975. A is the right answer. The next is, where was the 12th edition of Sri Lanka India Naval Force Linux 2025 hosted? Visakhapatnam, Colombo, Kochi, Trincomalee. What is the right answer to this question? SLINEX, Sri Lanka India Naval Exercise.
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोलंबो, श्रीलंका की कैपिटल है. ओके, सो ये इंडिया के शिप थी आईएनएस ज्योति, आईएनएस राणा, और श्रीलंका के ये दोनों शिप थी which participated in this joint naval exercise. Let's move on. Why was the Indian tricolor hosting at the Space Needle considered historic recently? Anyone? So actually क्या हुआ था, first time any foreign flag was hosted at this landmark. Actually ये सिएटल में एक जगह यूएस में, तो यूएस की जगह इंडिया का फ्लैग यहाँ पर है ना था, ये this one. Indian tricolor hosted atop Seattle's iconic Space Needle in historic first. Okay. B is the right answer to this question. The next is, where is India's first sustainable aviation fuel plant located? Panipat, Jamnagar, Haldia, Bina. एविएशन फ्यूल मतलब जो हवाई जहाज में फ्यूल यूज होता है ना, जो एरोप्लेन में फ्यूल यूज होता है वो नॉर्मल नहीं होता जो आप गाड़ी पेट्रोल भराते हो. दैट इज नॉट, इट्स डिफरेंट है ना. सो पानीपत जगह है इन हरियाणा ना. पानीपत इज फेमस फॉर बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई थी ना, उसके लिए फेमस है. इंडिया स्टार्ट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लांट टू स्टार्ट प्रोडक्शन बाय ईयर. यूज कुकिंग ऑयल है, उसको रीयूज किया जाएगा. ठीक है, प्लेन्स में यूज किया जाएगा. इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट इज, व्हेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बीइंग ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? Partition Horror Remembrance Day, 14th August, just one day before Republic Day, before Independence Day. ठीक है, is the right answer. Let's move on to the next one. What is the name of the mascot unveiled for 12th Men's Asia Cup Hockey? Veer, Sher, Chand, Dhyan. What is the right answer? राइट आंसर इज चांद. मेजर ध्यानचंद थे ना, उन्हीं के नाम पर जो हॉकी कहते हैं ना. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. और अभी हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है ना, आई थिंक फ्राइडे से स्टार्ट होगा बिहार में. The next one is, where was Uttar Pradesh first green hydrogen plant inaugurated? So green hydrogen जो एक तरह का रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको पता होना चाहिए. लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर. What is the right answer? The right answer is D, Gorakhpur. ठीक है, D is the right answer to this question. Inaugurates India's first green hydrogen plant, Gorakhpur. Let's move on to the next one. What issue did Supreme Court of India recently take suo motu cognizance of? Suo motu cognizance मतलब होता है किसी ने petition file नहीं किया, no one filed a petition, but Supreme Court took up the case by itself. तो एक्चुअली हुआ ये था कि इंडियन एक्सप्रेस में आई थिंक वो आर्टिकल छपी थी, किसी अखबार में छपी थी, एज फार एज आई कुड रिमेंबर इंडियन एक्सप्रेस में. तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पढ़ लिया होगा, तो फिर उन लोगों ने सुओ मोटो ले लिया. प्लाइट ऑफ कैडेट्स डिस्चार्ज ड्यू टू डिसेबिलिटीज ड्यूरिंग ट्रेनिंग. जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है ना. ओके, सो आफ्टर मीडिया रिपोर्ट फ्लैग द इशू ऑफ दीज कैडेट्स है ना. तो इसमें हुआ यह था कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग में कुछ लोग जो इंजोर्ड हो जाते हैं, were medically discharged from military institute on account of disability suffered during training program. मतलब पहले तो फिट थे लेकिन ट्रेनिंग में कोई गिर गया, किसी को चोट लगी होगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हुआ होगा. तो उन लोग को फिर जो है 500 ऑफिसर्स हैव बीन मेडिकली डिस्चार्ज फ्रॉम दिस मिलिट्री सिंस 1985. सो पिछले 40 इयर्स में 500 ऐसे ऑफिसर हैं जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया था कि आप फिजिकली फिट नहीं है. ओके, एंड स्टेयरिंग एट माउंटिंग मेडिकल बिल्स विद एन एक्स ग्रेशिया मंथली, दैट्स फार शॉर्ट ऑफ दिस नीड है ना.
तो मतलब उनका जो बिल है, मेडिकल बिल, वो बहुत ज्यादा हो रहा था, जो उसमें चोट लगी होगी या जो भी, तो इसी से रिलेटेड था. They are not entitled as per the rules. They are not entitled to the status of ex serviceman. तो इन लोगों को, चूंकि इन लोगों ने अभी सर्विस ज्वाइन भी नहीं किया थे, एक तरह से अभी तो ट्रेनिंग में ही थे ना, तो उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता, तो उससे रिलेटेड मैटर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप कर लिया केस को. ठीक है, तो उसी पर हियरिंग हो रहा था. इसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो डिटेल में. विच वुड हैव मेड देम एलिजिबल फॉर अंडर सर्विसमैन एटसेट्रा. हाँ, अगर उनको एक्स सर्विसमैन अज्यूम कर लिया जाएगा ना, तो उनको बहुत सारे और हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा, है ना. तो इन लोगों को एक्स ग्रेशिया इतना कम अमाउंट मिलता है. दैट इज व्हाट, बिकॉज दे एक्चुअली बिकेम एक्चुअली डिसेबल ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ओनली, है ना. तो अभी ट्रेनिंग ही में, अभी फाइनल उसमें आए भी नहीं थे कि उसी वक्त वो डिसेबल हो गए थे, तो उनसे रिलेटेड मैटर है. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.